डेली फार्मा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है, मॉर्फिन सल्फेट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मॉर्फिन सल्फेट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल एक्स, सेकेंड है शेड्यूल के, थर्ड है शेड्यूल एक्स, फोर्थ है शेड्यूल जी। इसका सही आंसर है शेड्यूल एक्स। मॉर्फिन सल्फेट कम्स अंडर शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स क्या है? शेड्यूल एक्स फॉर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट passes 1984 and comes into force 1993. शेड्यूल के क्या है? शेड्यूल के फॉर लिस्ट ऑफ ड्रग्स exempted from मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन। लिस्ट ऑफ ड्रग्स exempted from manufacturing provision. Schedule H for prescription drug. Drugs can be sold on prescription of registered medical practitioner. Schedule G. Schedule G for drug which are given under medical supervision. Drugs which are given under medical supervision. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड, बीच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूडेड पैक साइज ऑफ ड्रग। बीच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूडेड पैक साइज ऑफ ड्रग। फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल P1, सेकेंड है शेड्यूल P, थर्ड है शेड्यूल R, फोर्थ है शेड्यूल R1। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन शेड्यूल P1। पैक साइज ऑफ ड्रग्स इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल P1। शेड्यूल P क्या है? शेड्यूल P फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल R, शेड्यूल R फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर condoms made up of rubber, latex intended for single use and other medical contraceptive. Schedule R for medical contraceptive. Schedule R1 for standard for, Schedule R1 क्या है? Standard for medical devices. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी कौन से शेड्यूल में आता है? ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल सी, सेकेंड है शेड्यूल डी, थर्ड है शेड्यूल एन एंड फोर्थ है शेड्यूल पी। इसका सही आंसर क्या है? थर्ड, शेड्यूल एन। शेड्यूल एन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी। शेड्यूल सी क्या है? शेड्यूल सी फॉर बायोलॉजिकल एंड पेशियल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल एंड पेशियल प्रोडक्ट। शेड्यूल डी फॉर, शेड्यूल डी किसके लिए? क्लास ऑफ ड्रग्स which are exempted from certain provisions applicable to import of drug. And schedule P, शेड्यूल P में क्या आता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग पूछा तो शेड्यूल P। एंड पैक साइज ऑफ ड्रग्स अभी हमने देखा था, पैक साइज ऑफ ड्रग शेड्यूल P1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The words questions, it is dangerous to take this preparation except under medical supervision is a statutory labeling requirement for. It is dangerous to take this preparation except under medical supervision कौन से शेड्यूल में आता है? ऑप्शन देखेंगे। शेड्यूल सी, सेकेंड है शेड्यूल जी, थर्ड है शेड्यूल एच, फोर्थ है शेड्यूल एक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन शेड्यूल जी। शेड्यूल जी फॉर
drugs which are given under medical supervision. Drugs which are given under medical supervision. शेड्यूल सी अभी हमने देखा था, क्या है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट. शेड्यूल एच फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. ड्रग्स कैन बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ registered medical practitioner. And schedule X for narcotic drugs and psychotropic substance. NDPS Act. NDPS Act passes 1985, comes into force 1993. ये याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Poisonous drugs are covered under. Poisonous drugs are covered under. First option is Schedule F, second is Schedule E, third is Schedule Y, and fourth is Schedule H. इसका सही आंसर क्या होगा? शेड्यूल ई. शेड्यूल ई में क्या आता है? पॉइजनस ड्रग. क्या आता है? पॉइजनस ड्रग्स. शेड्यूल वाई. शेड्यूल वाई में क्या आता है? रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर import and manufacture of new drugs. And Schedule H for prescription drugs. Schedule H for prescription drugs. Drugs can be sold on prescription of registered medical practitioner. And Schedule F for blood bank. Next question देखेंगे. Which of the following schedule included life period of drug? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हमने देखा था. फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल पी, सेकेंड है शेड्यूल यू, थर्ड है शेड्यूल वी, एंड फोर्थ है शेड्यूल डब्ल्यू. इसका सही आंसर क्या है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग शेड्यूल पी. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. P1 में क्या आता है हमने देखा था? पैक साइज ऑफ ड्रग. शेड्यूल यू फॉर यू किस में आता है? Particulars to be shown in manufacturing record. Schedule V, tenders for patent and proprietary medicine and for patent and proprietary medicine containing vitamin. And Schedule W for list of drugs which shall be marketed under generic name only. Generic name only. List of drugs marketed under generic name only. Schedule W. Next question देखेंगे. Requirement and guidelines on clinical trials for import and manufacture of new drugs are included in which schedule? First is Schedule Y, second is Schedule N, third is Schedule O, fourth is Schedule R. Requirement and guidelines on clinical trial for import and manufacture of drugs are included under Schedule Y. आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन शेड्यूल Y. एंड शेड्यूल M हमने देखा था. लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी. शेड्यूल O क्या है? स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड. डिसइंफेक्टेड फ्लूइड किस में आता है? शेड्यूल O. एंड शेड्यूल R. R में क्या देखा था? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. शेड्यूल फॉर कॉस्मेटिक. कॉस्मेटिक किस शेड्यूल में आते हैं? फर्स्ट है शेड्यूल एस, सेकेंड है शेड्यूल टी, थर्ड है शेड्यूल एक्स, फोर्थ है शेड्यूल वाई. कॉस्मेटिक आते हैं शेड्यूल यस. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. शेड्यूल टी किसके लिए? GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा आणि यूनानी मेडिसिन. शेड्यूल एक्स किसके लिए देखा था हमने? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. एंड शेड्यूल वाई, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. शेड्यूल डी इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट refers to. फर्स्ट ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स exempted फॉर import provision.
सेकेंड है लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, थर्ड है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, एंड फोर्थ है स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। इसका सही आंसर क्या है? शेड्यूल डी क्या है? लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट प्रोविजन। आंसर करेक्ट इज आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। पॉइजनस सब्सटेंस किस में आते हैं? शेड्यूल ई फॉर पॉइजनस सब्सटेंस। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट शेड्यूल सी। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक अभी हमने देखा था शेड्यूल यस। लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फॉर इम्पोर्ट प्रोविजन शेड्यूल डी। लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस शेड्यूल ई। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट शेड्यूल सी। कॉस्मेटिक शेड्यूल यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेड्यूल फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल एफ, सेकेंड है शेड्यूल एच, थर्ड है शेड्यूल आई, एंड फोर्थ है शेड्यूल जे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कम्स अंडर शेड्यूल एफ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। शेड्यूल एच फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ड्रग्स कैन बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। शेड्यूल आई particulars as to proportion of poisons in certain cases, and schedule G disease, list of disease and elements which a drug may not claim to prevent or cure. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेड्यूल जे इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रेफर्स टू। शेड्यूल जे अभी हमने देखा था। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलिमेंट विच अ ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। सेकेंड, लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। थर्ड, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, एंड फोर्थ है स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलिमेंट विच अ ड्रग मे नॉट क्लेम टू क्योर। गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस किस में आता है? शेड्यूल यल। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड शेड्यूल ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी इज गिवन इन। ये भी हमने देखा है। फर्स्ट ऑप्शन शेड्यूल ओ, सेकेंड शेड्यूल एन, थर्ड शेड्यूल पी, फोर्थ शेड्यूल आर। किस में आता है? लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल एन। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। शेड्यूल ओ फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। शेड्यूल पी फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, and P1 for pack size of drug. Schedule R for mechanical contraceptive devices. Next question, standards for mechanical contraceptive comes under schedule dash dash as per Drugs and Cosmetic Act 1948. फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल आर, सेकेंड है शेड्यूल R1, थर्ड है शेड्यूल एस, फोर्थ है शेड्यूल टी। इसका सही आंसर होगा स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स कम्स अंडर शेड्यूल आर। शेड्यूल एस फॉर कॉस्मेटिक, शेड्यूल टी फॉर GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा and यूनानी मेडिसिन। शेड्यूल R1 फॉर स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। Medical devices come under schedule R1 and R for contraceptive. Next question, requirement of factory premises for manufacture of cosmetics comes under which schedule? First option is schedule M second, second है schedule M second, third है M third, and fourth है schedule N, schedule M1 करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? शेड्यूल एम सेकेंड। रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइजेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स कम्स अंडर शेड्यूल एम सेकेंड।
Second option correct. Schedule N for list of minimum equipment for the efficient running of pharmacy. Schedule M first, good manufacturing practices and requirement of premises, plant equipment for manufacture of homeopathic preparation. M1 for homeopathic preparation. M second for cosmetic. And M third for requirement of factory premises for manufacture of medical devices. M1 homeopathic, M second cosmetic, M third medical devices.